हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतिश्री स्टडी जोन। सो आज हम स्टार्ट करवा कैपेसिटर। ठीक अच्छे, तो आम आज कैपेसिटर विषय पढ़ा। तो देखना आम फर्स्ट कौन अच्छी। फर्स्ट आम जाना व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन, आम कहीं कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर कौन, इट इज अ डिवाइस मेड ऑफ टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। कैपेसिटर होची गोटे डिवाइस जोटा कि दीटा पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स को लेके बनी थाए। ठीक अच्छे, इन अदर वर्ड्स पे मैंने आम या भी कही परबा अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट व्हिच प्रोवाइड्स अ लार्जर कैपेसिटी इन अ स्मॉलर स्पेस। आम मध्य कही परबा कौन, अ कैपेसिटर कौन is an arrangement which provides a larger capacity in a smaller space। या अर्थ कौन ना, कैपेसिटी इज एन अरेंजमेंट। एटा गोटे कैपेसिटर गोटे अरेंजमेंट जोटा कि आमको प्रोवाइड करे लार्जर कैपेसिटी इन अ स्मॉलर स्पेस। छोटिया स्पेस भितरे कैपेसिटर आमको प्रोवाइड करे लार्जर कैपेसिटी। बुझिपार। So two pieces of metal foil separated by a dielectric can be rolled into cylindrical shape। ठीक अच्छे, तो यहाँ आमर होची पॉजिटिव प्लेट, एटा होची आमर नेगेटिव प्लेट। एयर ऑफ इलेक्ट्रिक एरिया ऑफ द प्लेट। सो यहाँ कौन करे पिला माने मेनली आम कही परिबा ये जो कैपेसिटर यहाँ आमर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखे। इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज और इट स्टोर्स चार्ज एंड यार गोटे यार पोटेंशियल डिफरेंस मध्य अच्छी। तो आम एति कहवा ये पिला माने एग्जाम रे 3 मार्क्स कि 2 मार्क्स क्वेश्चन रे आसे व्हाट इज अ कैपेसिटर। सो आम एति लिखा जी इट इज अ डिवाइस मेड ऑफ टू। फर्स्ट आम लिखा व्हाट इज कैपेसिटर। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट which provides a larger capacity in a smaller space। एटा पिला माने तुमको मन रखिया पड़िबो कैपेसिटर कौन। कैपेसिटर कौन ना, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट which provides a larger capacity in a smaller space। तापर पॉइंट रे लिखिबा it is a device made of two parallel plate conductors। देन आमे ये जो डायग्राम टा इठी आमे देखि पारुछे, ये डायग्राम टा आमे करबा एग्जाम रे। ठीक अच्छे, तापर लिखिबा कौन ना, इट इज अ डिवाइस मेड ऑफ टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। तापर टू पीसेस ऑफ मेटल फॉयल सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक कैन बी रोल्ड इनटू सिलिंड्रिकल शेप। ठीक अच्छे, तो यहाँ आमर होची पॉजिटिव प्लेट, एटा होची आमर नेगेटिव प्लेट। आउ गोटे पॉइंट आम ऐड करबा, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज और इट स्टोर्स चार्ज एंड ऑल्सो इट हैज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एंड ये जो डी पिला माने आमे देखुचे एटा होची सेपरेशन डिस्टेंस। ये जो डीटा यहाँ हूँ आमको ये जो प्लेट दीटा जाक भितर जी सेपरेशन होटा कौन डी सेपरेशन डिस्टेंस एंड ये डेल भी आमर पोटेंशियल डिफरेंस। बुझिपार समस्ते। ओके, तापर आमे जीवा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Parallel plate capacitors are the type of capacitors that have an arrangement of electrodes and insulating material जोटा कि आमे कहूँ dielectric। The two conducting plates acts as electrodes। There is a dielectric between them। This acts as a separator for the plates। So एठी पिला माने आमे कौन देखुचे, दीटा parallel plate देखुचे।
कौन दीटा पैरेलल प्लेट देखुचे आर इक्वल डायमेंशन रो दीटा पैरेलल प्लेट आम ये देखुचे कैपेसिटर कौन से दे आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई से पावर सप्लाई कनेक्टेड होती so the plate connected to the positive terminal of the battery acquires a positive charge ठीक अच्छे प्लेट जोटा आमर पॉजिटिव टर्मिनल सहित कनेक्ट अच्छी सेटा एक्वायर करुच्ची पॉजिटिव चार्ज यहाँ आमर पॉजिटिव टर्मिनल सहित कनेक्टेड होके अच्छी so it acquires positive charge and this plate connected to the negative terminal of the battery so it acquires a negative charge okay so kauna the two plates of parallel plate capacitor are of equal dimension eti amara dita parallel plate capacitor deichi equal dimension ro they are connected to the power supply so the plate जोटा कि आमर कनेक्टेड अच्छी पॉजिटिव टर्मिनल सहित सेटा एक्वायर कर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैंड रे जो प्लेटा आमर कनेक्ट होके अच्छी नेगेटिव टर्मिनल सहित सेटा एक्वायर कर नेगेटिव चार्ज due to the attraction charges are in a way trapped within the plates of the capacitor काहेकि due to the attraction of charges गुड़ाकर attraction जोगु ये सब होउची तो पिला माने हमें प्रीवियस क्लास रे पढ़ी थिले प्लीज जो माने जानि छ कमेंट सेक्शन रे कमेंट करबो जे आमे जदी एठी पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रखिबा ताहले परस्पर को ए दुईटी अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे जदि नेगेटिव रखिबा ताहले एमाने अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव जो मैंने जानिछ प्लीज कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो एंड जो मैंने जानि न हो से कही दूची एठी जदि आमे पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रखिबा ताहले सेमाने परस्पर को केबे भी अट्रैक्ट करेंगे सेमाने सब बेले परस्पर को रिपेल करेंगे लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर आमे जदि दीटा लाइक चार्जेस को रखिबा गोटे फील्ड रे तो सेमाने केबे भी अट्रैक्ट करेंगे दुई जन को तुम भावुव दीटा आमे सेम चार्ज रखिदवा तो दीटा जगह अट्रैक्ट करेंगे नो जदि आमे लाइक चार्जेस माने समान चार्ज एठी पॉजिटिव चार्ज आमे रखिदवा ताहले सेमाने सब बेले परस्पर को रिपेल करेंगे बट जदि आमे ए जगार कौन करवा एठी पॉजिटिव चार्ज अच्छी जदि आमे एठी नेगेटिव चार्ज रखिदवा तो सेमाने परस्पर को अट्रैक्ट करेंगे ओके बुझिपार समस्ते आउ थे मुझे कहीदे पॉजिटिव एमाने परस्पर को रिपेल करेंगे नेगेटिव एमाने मध्य परस्पर को रिपेल करेंगे बट पॉजिटिव नेगेटिव एमाने परस्पर को अट्रैक्ट करेंगे एंड नेगेटिव पॉजिटिव एमाने मध्य परस्पर को अट्रैक्ट करेंगे ठीक अच्छे मन रहा समस्त like charges are always repel each other and unlike charges are always attract each other मन रखिदेव पिला माने कौन like charges कौन करेंगे रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे बुझीगला क्लियर सो तापर आम जा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एटा ओनली पिला माने थ्योरीटा मन रखिथिबो कौन ना वी नो दैट वी कैन गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज टू अ प्लेट ठीक अच्छे जदि आम कौन करवा ना प्लेट को गोटे सर्टेन अमाउंट रो चार्ज दबा देन इफ वी सप्लाई मोर चार्ज जदि आम मोर चार्ज सप्लाई करवा देन द पोटेंशियल इंक्रीजेस ऑब्वियसली जदि आम प्लेट को मोर चार्जेस बहुत चार्जेस सप्लाई करवा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तो बढ़िबो ना एंड इट कुड बी लीड टू लीकेज इन दिस चार्ज चार्ज लीक भी हो पारे
If I get another plate and place it next to this positively charged plate, the negative charge flows towards the side of this plate which is closer to the positively charged plate. एटा closer हिजवा कोई plate को positively charged plate को. Okay, a dielectric is an insulator and is characterized by a dielectric constant को आमे को symbol द्वारा लिखि थाउ सब बेले K. Dielectric constant होची K. So the capacitance of a parallel plate capacitor filled with a dielectric is a formula टा पिला माने बहुत थारे एग्जाम रे आमे जेते बेले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूचे ए फॉर्मूला टा बहुत जगह हमरे काम रे आसुची. तो फॉर्मूलाटा तुम मैंने नोट डाउन करदेव मन रखिथिबो. एग्जाम रे जेतेबेला हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करबा दब सो आम कौन से प्रॉब्लम रो फेस करबानी जदि ए फॉर्मूला गुड़ा सब मन रखिथबा न्यूमेरिकल्स आम बहुत इजी हो. तो C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपन D. ठीक अच्छे. ये K आमर हो कौन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट and permittivity is epsilon naught कौन. Permittivity is defined as epsilon is equals to K epsilon naught. आम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़ी ना एठी कौन पढ़ी epsilon naught upon epsilon naught epsilon divided by epsilon naught is equals to K. K is a constant पढ़ी ना एटा में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रे मन अच्छी. तो ये से फॉर्मूलाटा अप्लाई होती. परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स स्टार्टिंग रो आमे जानिचे कैपेसिटर कौन. कैपेसिटर होची हमर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके रखे किए कैपेसिटर. सो कैपेसिटर रे काम होची से इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखिबो. सो एठी देखिबा E is equals to half Q into V and energy of a capacitor can also given by E होची हमर energy is equals to half C into V square and E is equals to half Q square upon C. Energy is stored as electric charge on the plates of capacitor. Okay, Q होची हमर एठी कोन चार्ज. सो एटा होची फार्मूला हमर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. सो U इज इक्वल्स टू एटा होची पिला माने तार डेरिवेशन केमिति हमें बाहर कले E इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपन C. U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपन C. ओके, एटा को हमें सॉल्व करबा पुटिंग Q इज इक्वल्स टू CV. सो Q जता बेले Q इज इक्वल्स टू CV जता बेले Q पाखरे हमें CV पकेले सो U इज इक्वल्स टू हाफ इनटू CV स्क्वायर हे गला. सो नाउ पुटिंग Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल्स टू V. ओके, तो केते हे जबा एठी इक्वेशन 2 रे जदी हम पुट करबा V इज इक्वल्स टू Q बाय C सो एठी हमरे हे गला U इज इक्वल्स टू QV. Thus, energy stored in charged capacitor U is equals to half Q square upon C and finally answer is equals to half CV square is equals to half Q into V. बुझी पारलो समझते. So energy stored in a capacitor varies directly as the square of the charge in it. So energy stored in a capacitor varies directly as the square of the charge in it. So एटा बुझी पारलो. एटा होची पिला माने डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट. एटा एग्जाम रे प्राय आसे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तुमको डेरिवेशन पचार थबो तो तुम एटा डेरिवेशन करि परिबा समस्त. आई हो. सो आम पढ़ा एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी आमर कौन हुए. एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर देख पे मैंने ये सपोज फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. फॉर ए पैरेलल प्लेट
पैरेलल प्लेट पाई आम काढ़ा ये सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. Okay, if E is the strength of the field in between the two plates, so এটা আমরা হিজব কেতে পিলা মানে কেতে হিজব এটা যদি E is the strength of the field in between two plates तो ଆମର E হিজব কেতে epsilon naught. Okay, और sigma is equals to epsilon naught E. जदि E आमर कौन हुए फील्ड स्ट्रेंथ इन बिटवीन टू प्लेट्स भितर जदि आमर फील्ड स्ट्रेंथ हुए ताले ए हम. सो एठी Q is equals to A. So Q is equals to A epsilon naught E. ओके तो कौन हो गला आमर अच्छे फाइनल हो गला आमर एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी कौन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. सो ये आम देखा कौन कहली मो एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी कौन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. ताहले एनर्जी डेंसिटी एटा को ईडी म कर दो पिला माने ईडी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू कौन W अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर W अपॉन वॉल्यूम. W कौन W कौन एठी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड V एठी वॉल्यूम. सो ED इज इक्वल्स टू W अपॉन V. W होची एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड V होची वॉल्यूम. सो W इज इक्वल्स टू हमें कौन जाने W इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर U अपॉन वॉल्यूम होची V. सो ये आमर सब सॉल्व है कि फाइनल आंसर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ओके ये आमर सही आंसर आसी E इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. सो आम जानिले ये कौन ना एनर्जी डेंसिटी आमर कौन हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड E स्क्वायर. So it is clear that the energy density of a capacitor is independent of the area of the plates, of distance between them, so long the value of E does not change. Okay, so मन रख पिला माने एनर्जी डेंसिटी रो फॉर्मूला होच कोन ना एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. यार फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सो नोट डाउन द फॉर्मूला केते E इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड कैपिटल E स्क्वायर. एटी कैपिटल इज E कोन स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स. E कौन स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स. ऑल क्लियर. वीडियोटी जो भल लगी थाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिए. थैंक्स फॉर वाचिंग.